Good morning, students, and welcome in the world of accountancy. I have not made videos for class 11 for a long time, and that's why today I have allotted my time for you people. In the first chapter, we discussed about nature, objective, and scope of accounting. Today, I will take certain things from your second chapter, that is basic accounting terms. Basic accounting terms. This is the part of chapter 2. Being a new subject for students of 11, even terminologies are very important to be explained. But I think all the terminologies I am not going to explain you, because certain things you must study books. You must be in the habit of going through the books. That will enhance your knowledge and prepare you for furtherance of the knowledge of accounting. But certain things I will definitely tell you and will focus upon. Let us take one equation, that is assets is equal to liabilities plus capital. This is the accounting equation. Asset is equal to liabilities plus capital. I will tell you what is asset, what is liabilities, what is capital, and what is the expanded form of this equation. Expanded and pictorial presentation of this equation is balance sheet. I have told you time and again that the objective of accounting is to prepare financial statement. Financial statement consists of profit loss account and balance sheet. Trading and profit loss account and balance sheet. Trading and profit loss account is known as income statement, and balance sheet is known as position statement. Position statement. It tells you about the position of any business, any organization, what assets it owns and what are the liabilities that it is supposed to pay. You saw capital and liabilities here and assets here. Amount is this. This is how you prepare balance sheet. By seeing the balance sheet, any person can understand the position of the business. What are its assets? What are its liabilities? He can easily understand, evaluate the position of the business. So, what is assets? First of all, I would like to discuss what is asset. How will you define asset? For any business, whatever it owns, the position of which it has, that is assets. Assets have income generating capacity. Assets, संपत्तियां, इनके पास इनकम पैदा करने का पावर होता है. These are revenue generating properties. Assets are revenue generating properties that a business owns, that a business possesses. You may say that assets are those properties which can generate revenue, which can generate income for that organization which
owns it, which possesses it. So suppose you have a building, and using building you can generate revenue. You can rent it, you can use for some business purposes, and by this you can generate revenue. So building is what? Building is an asset because it has revenue generating feature. Now, so this is how you can define assets. Assets are of different types. Non-current assets. Two broad categories I am explaining. Non-current assets and current assets. First of all, I will tell you what is current asset. Current asset क्या होता है? Current जिसमें प्रवाह है, that is never static, that is always changing, that is ever changing, जो हमेशा बदल रहा है. आपके पॉकेट में पैसा जो है ना, वो हमेशा बदल रहा है. हम सब अपने पॉकेट में पैसा रखते हैं, खर्च कर देते हैं, फिर से पॉकेट को रिफिल करते हैं. इट इज द मनी इन पॉकेट इज ऑलवेज चेंजिंग. इसी तरह व्यापारी अपने व्यापार में स्टॉक रखता है, सेल करता है, खत्म हो जाता है, दूसरा स्टॉक आता है, फिर सेल कर देता है, तीसरा स्टॉक आता है. मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लाता है, कंज्यूम हो जाता है, फिर लाता है. इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. दैट्स व्हाई दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ करंट असेट्स. सो इन करंट असेट्स वी कैन इंक्लूड कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक. ये कई प्रकार के हो सकते हैं. फिनिश गुड्स का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें कुछ काम हुआ है लेकिन अभी भी पूरा तैयार नहीं हुआ है, जब पूरा तैयार होगा तो बिकेगा, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. तो इन्वेंट्री कई प्रकार की हो सकती है. हो सकती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स, और वो हो सकता है फिनिश्ड गुड्स. ये सभी क्या हैं? ये सभी करंट असेट हैं, क्योंकि ये टिकने वाले नहीं हैं. ये बिक जाएंगे, ये कंज्यूम हो जाएंगे, फिर दूसरा स्टॉक आ जाएगा. इट इज इवर चेंजिंग. कैश भी इसी तरह बदलता रहेगा, बैंक बैलेंस भी बदलता रहेगा. डेटर्स भी बदलते रहेंगे. नाउ क्वेश्चन अराइज, हु आर डेटर्स? डेटर्स आर द इंडिविजुअल्स, फर्म्स who owe money to us. हमारा बिजनेस है और हमने लोगों को उधार दिया है, क्रेडिट सेल किया है, तो जिनको हमने क्रेडिट सेल किया है दे हैव टू पे अस, दे आर आवर डेटर्स. इसलिए डेटर्स क्या होते हैं? हमारे लिए असेट होते हैं, क्योंकि वे हमें रेवेन्यू देंगे. वे हमसे लेंगे नहीं, वो हमको देंगे. डेटर्स. बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल ऐसा कि नाम में लिखा है रिसीवेबल, यानी जो प्राप्त करने योग्य हैं, जो हमें मिलेंगे. ऐसे बिल्स जिनका पेमेंट हमको मिलेगा, वो क्या हो गए? वो भी डेटर की कैटेगरी में ही हैं. ये सभी क्या हैं? करंट असेट हैं. इसके अलावा और भी आइटम्स आते हैं, मैं अभी उनका नाम यहाँ पे लिखित नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मन में फिर एक डाउट पैदा होगा ये क्या होता है. बट टुडे आई विल रेस्ट्रिक्ट टू दिस मच ऑफ करंट असेट्स. सो दीज आर करंट असेट, एंड कॉन्ट्रेरी टू दिस व्हाट आर नॉन करंट असेट्स. जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि करंट असेट्स का हमेशा ये चेंज होता रहता है, इसका स्टॉक वही नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है. वैसे ही नॉन करेंट असेट में क्या है? इसके विपरीत है. क्या है? ये शॉर्ट टर्म में इनका
स्वरूप नहीं बदलता, इनकी पोजीशन नहीं बदलती। यहाँ शॉर्ट टर्म में बदल जाता है। शॉर्ट टर्म बोले तो क्या? शॉर्ट टर्म बोले तो 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 6 month, up to 1 year, or you may say 1 operating cycle. उसके अंदर generally 1 year it is. Within 1 year, this will change time and again. There will be frequent changes. Therefore, this is current asset. But here, in the short run, within 1 year, it is not going to change. तो कौन से ऐसे assets हैं? जैसे land, जैसे building, जैसे machinery, जैसे furniture, ये सब जितने भी हैं ना, ये निकट भविष्य में इनमें चेंजेस नहीं होते हैं। Once invested money in these assets, they will be used for a long period of time and they will generate income, revenue for its owner. So these are assets and these are non-current assets, जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट्स। और ये जितने भी हैं ना, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इनको हम टच कर सकते हैं। वी कैन टच इट, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं उसको। एंड दैट इज वाई दीज आर इनटेंजिबल असेट्स आल्सो। माफ कीजिएगा, दीज आर टेंजिबल असेट्स। These are tangible assets. मैंने tangible asset इसलिए बताया क्योंकि इस कैटेगरी में नॉन करेंट असेट्स में कुछ असेट्स ऐसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होते, जिनके पास रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, लेकिन वो इनटेंजिबल होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? लेट मी शो द लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। इन this is tangible, and then we come to intangible fixed assets. For example, goodwill, patent, copyright, etc. So copyright is also an asset. How it is an asset? Because suppose I have written a book and some people come to me, sir, I want to print 10,000 books of the books that you have written. So I will say, please first of all pay the fee of copyright, then I will authorize you to print it. So this is an asset because it has revenue earning capacity, income generating capacity. Patent, I have certain formula for making some popular product. People will come to me, yes, I want to produce 1 lakh units of this product. Please provide me the formula. Yes, please pay me the fee, patent fee. Then only I will authorize you to produce. This also is having revenue generating capacity, income generating capacity. So these are also assets. But these are different from this because this we can touch, this we cannot touch. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आप इसमें डाल सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर you can touch, but software cannot touch. So these are patent, copyright, computer software, goodwill. These are intangible, but these are non-current assets. Means fixed assets. These are fixed assets where investment is done for a long period of time, and for a long period of time these assets generate revenue for its owner. So this is all about non-current asset, fixed asset, tangible assets, intangible assets, and this is current asset. I hope कि
you are understanding. And now you will be able to define what is asset and what are its types. Now, debtors bills receivable, already I told you. Inventory, different types of inventory, I told you. Let us come back to this equation. Asset is equal to liabilities plus capital. Let me write it rather. Only asset is equal to capital. This is the balance sheet. Asset is equal to capital. Not. This will be wrong. Asset is equal to liabilities, that I wanted to say. Asset is equal to liabilities. Yes, of course. Assets is equal to liabilities. Because the liabilities are the sources of फंड. लायबिलिटीज आपको ये बतलाता है कि आपके पास बिजनेस में, आपके बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है. और असेट्स बताता है कि इस पैसे को आपने किन इनकम जेनरेटिंग असेट्स में उसको इन्वेस्ट किया है. दीज आर द यूजेस ऑफ फंड. These are sources of fund and these are uses of fund. ये जो आपने फंड जुटाए डिफरेंट सोर्सेस से, तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस इज सपोज टू पे इट बैक. एंड दिस फंड हैज बीन यूज्ड इन परचेजिंग दिस एंड दीज असेट्स. दिस लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, computer, software, etc. Computers, hardware, software, etc. So these funds have been used for purchasing these assets, and by now using these assets you will generate income. This is the business. You can see how business is being done by this detailed pictorial presentation of this equation in the form of balance sheet. Now sources of fund. What will be the sources of fund? These will be, suppose it is a sole proprietary concern. I am not going to advanced level, partnership and company. Suppose it is a sole proprietary concern, then capital contributed by the proprietor. Proprietor ने capital contribute किया, बैंक से लोन लिया.